Hello, we are live. Good afternoon, and welcome back to another session of Hindu analysis. Today is 23rd of January. It's a beautiful Thursday afternoon, and we are ready to begin. How many of you are here with me on the live stream? Please let me know in the chat box if I'm audible, if I'm visible, if everything is working fine. Priyanshi is here. Good afternoon. Let's wait for a minute or so for more people to join in, and then we'll start. Till then, let me present the screen with you guys. T3 January. Okay. Augusta is here. Anusha is here. Good afternoon, guys. Welcome to the class. Start करें? Should we begin? Or should we wait for a few more seconds for more people to join in? Chalo, I think let's begin. People would keep on joining in with time. Let's start today's session of Hindu analysis. So that is the PPT. Let's look at today's agenda. आज हम तीन चार आर्टिकल्स जो है डिस्कस करेंगे. थोड़े से डिफरेंट आर्टिकल्स हैं आज ऑन वेरी डाइवर्स सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स. वन आर्टिकल इज अबाउट क्रॉसपैथी. क्रॉसपैथी क्या होता है? अब आप लोगों ने एलोपैथी शायद सुना होगा, होम्योपैथी शायद सुना होगा. इन दोनों का क्रॉस कर दो तो दैट्स कॉल्ड क्रॉसपैथी. Why is this in news? This is in news because महाराष्ट्र की जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स को दैट आफ्टर टेकिंग अ पर्टिकुलर लाइसेंस दे कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब एलोपैथिक मेडिसिन. ठीक है, आई होप आप लोग समझते हैं एलोपैथी और होम्योपैथी के बीच का डिफरेंस. एलोपैथी इज मोर ऑफ योर specific drugs for specific diseases कह लो, ailments कह लो, problems कह लो, which is backed by medical science, backed by research, all of those things. Homeopathy is, I don't want to call it unscientific, but it has lesser scientific backing. There has been lesser scientific research to prove its effectiveness. And yeah, I mean, that's pretty much it. Some people go on to the extent of calling it pseudoscience. We won't go into that debate. Homeopathy is a real science. Does it work? Does it not work? It's personal. So yeah, the article is on the topic that they have received the license. They have received the permission to take this license and then prescribe allopathic medicines. And the Indian Medical Association is against this particular decision because they are saying that homeopathy doctors are not qualified enough to prescribe allopathic medicines. Allopathic medicines, if prescribed wrongly, can have side effects which can even result in fatal sort of incidents. And इन्होंने एक highlight भी किया है महाराष्ट्र में एक incident where a homeopathic doctor prescribed allopathic medicine and the patient died as a result. So उसी से related ये article है, इसको हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे. Although most चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी जो जो हमें डिस्कस करनी थी. The next article, this is an editorial article, Russian roulette. Russian roulette क्या होता है? मतलब आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है ये वर्ड, but the article's title is sort of related to Russian roulette. Russian roulette is a gambling game. आप लोगों ने अगर अगर आप गए हो या फिर आपने मूवीज में देखा होगा या टीवी सीरीज में देखा होगा, तो कसिनोज में there is a game where there is a rotating sort of a, how do I put it, disc which has multiple markings like these, जिन पे नंबर्स लिखे होते हैं. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 बहुत सारे होते हैं नंबर्स. सम आर मार्क्ड इन रेड कलर, सम आर मार्क्ड इन ब्लैक कलर. एंड फिर आप बेट्स प्लेस करते हो कि लेट से 4 ऑफ रेड आएगा. एंड अगर आप जीत जाते हो, 4 ऑफ रेड आ जाता है, बॉल बॉल यहाँ पे रोटेट करता है जो प्लेयर खिलाता है. प्लेयर तो नहीं कहेंगे उसको, होस्ट कहेंगे. एंड इफ यू विन, if the ball lands on your number or color, then you win some amount of money. So that is called Russian roulette. Russian roulette in like literal terms is used to denote something which is based on luck, something which is not sort of calculated. It's based on something happening or something not happening. Correct? So article किस बारे में? Article is about aircraft
aircrafts being shot if they, deviate from their navigation path and enter into an airspace which they are not allowed to. So this is in context with the Russian Air Force shooting down an aircraft, a flight which was going from, I think, New York to Seoul. सियोल था या फिर जापान था, आई एम नॉट श्योर, आई चेक द आर्टिकल. एंड द रशियन एयर स्पेस शॉट डाउन दिस एयरक्राफ्ट. इट वाज 007 एयरक्राफ्ट, नॉट द जेम्स बॉन्ड वन, मॉडल का नाम है. क्यों शॉट डाउन किया? बिकॉज उसके नेविगेशन में दिक्कत आ गई थी एयरक्राफ्ट के, एंड इट एंटर इनटू द रेस्ट्रिक्टेड रशियन एयर स्पेस. तो उन्होंने डिशुम डिशुम करके गिरा दिया एयरक्राफ्ट को. एंड उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है कि कैसे वी नीड टू नेविगेट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. Then there is another article on China, India and critical minerals, to be specific, कि कैसे इंडिया को अपने critical minerals capability को enhance करना है, exploit करना है, make the best use of it, because China is working very aggressively on this particular issue. And geopolitically भी they have gained a lot of momentum due to critical minerals and their deals. एंड अभी यूएस के साथ इनका एक अरेंजमेंट हुआ है जहाँ पे चाइना ने कुछ मिनरल्स की सप्लाई, कुछ मिनरल्स का एक्सपोर्ट रोक दिया है टू द यूएस. So that is what the article is all about. Then there is another article about USA exiting the Paris Agreement. This we already know as a fact, but यहाँ पे इसके implications discuss हुए हैं. थोड़ा सा historical background मैं आप लोगों को दूंगा about climate agreements and the history of US. So that is something which we'll talk about. So these four topics are going to be discussed today. Then, of course, followed by 3 new words of vocabulary. Once again, important information for all of you is tomorrow we are going to have our first Menti quiz of the season. And now that our internet glitches and all of those issues are resolved, I hope the session would be conducted very smoothly, and I hope everything would work as per plan. So make sure you come up and turn up in huge numbers tomorrow. At least 20 लोग आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. ज़्यादा आएंगे तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा. इससे कम आएंगे तो मुझे थोड़ा सा दिल में दर्द होगा. But regardless, we are having the Menti quiz tomorrow, Friday, 3 p.m. in the Hindu analysis session. Topic मैं आप लोगों को बता चुका हूँ. People who are new or watching this later, the topic is military exercises, and especially focusing towards the military exercises in which India participates. So एक तरीके से आप कह सकते हो स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स सॉर्ट ऑफ मिक्स है ये, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइजेस से क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, बी इट क्लैट, बी इट एलिट, बी इट स्लैट. सो विल कवर एक एक करके ऐसे सारे टॉपिक्स. किसी दिन हिस्ट्री क्विज कर लेंगे, किसी दिन ज्योग्राफी क्विज कर लेंगे, किसी दिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्विज कर लेंगे, किसी दिन इकोनॉमी बेस्ड क्विज कर लेंगे. ऐसे करके हम धीरे धीरे अपनी स्टैटिक जीके भी इंप्रूव करते जाएंगे. ठीक है जी. So that is the agenda for today and tomorrow. With that, let's move on to our newspaper analysis and overview for the day. I hope everyone is ready to begin. If we are ready, can I have a very quick ready in the chat box if you guys are ready, if I'm audible, visible, if everything is sorted? A quick ready in the chat box would be highly appreciated. Everyone ready? Piyush is ready. Ajita is here. Anusha is saying, is news about COD important? Yes, it is. All right, everyone is ready. Chalo, theek hai, let's begin. Let's start. Let me just quickly pull up the newspaper for you all. All right, so that is today's Hindu newspaper. Magazine ka ad skip कर देंगे. Israel की magazine skip कर देंगे. 13 killed as train runs over passengers amid fire scare. No, usually ये जो incidents वाले या accidents वाले या crime वाले news होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पीओवी से थोड़े कम इंपॉर्टेंट होते हैं. बेसिकली कर्नाटक एक्सप्रेस जो है, एक ट्रेन है जिसने दैट रैन ओवर अ फ्यू पैसेंजर्स. हुआ कैसे? एक और दूसरी ट्रेन थी विच वाज द लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस. सो वेट, आई विल शो यू किस तरीके से द एक्सीडेंट सॉर्ट ऑफ हैपेंड. सो लेट्स से दीज आर टू पैरेलल ट्रैक्स एंड इस पे एक ट्रेन है. पार्डन माय बैड ड्राइंग गाइस, आई एम रियली बैड एट इट. So ये जो ट्रेन है, मान लो दिस वाज गोइंग दिस वे
एंड इसमें देर वॉज अ स्केयर, देर वॉज अ रूमर दैट इंजन में या किसी डिब्बे में आग लग गई, देर वर फ्यूम्स कमिंग आउट. सो पीपल थॉट दैट पूरी ट्रेन में आग लग जाएगी एंड दे वुड लूज देयर लाइफ. सो टू सेव देमसेल्व्स दे जम्प्ड ऑफ फ्रॉम दिस ट्रेन towards this particular track, few people. And इस side से the other train, Karnataka Express, was coming at a high speed, of course, and it ran over these people and they tragically lost their lives. So this is what happened. Let's come back to the newspaper. Maharashtra government has announced a 5 lakh rupees for each family, for families of the deceased. And yeah, that's pretty much the incident. On the right hand side, you see Marco Rubio calls for talks on migration as he meets Jaishankar. Now, Jaishankar refers to our foreign minister, and Marco Rubio is the foreign secretary of US. He has been newly appointed as foreign secretary. And in दोनों की meeting होगी, they will talk about migration, visa issues, all of those things, because this becomes important in light of the topic which we discussed yesterday, which is now people who are going to be born in US would not be natural citizens of US just because they were born in the US. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. Then another road accident in Karnataka, court reserve verdict in FIR against gallery in MF Hussain paintings case. So this was in yesterday's newspaper as well. It's not that important, but इसमें यही था कि MF Hussain he submitted his paintings for an art exhibition in Delhi, and those paintings were depicting explicit content which was sort of related to Hindu gods and goddesses. And uspe people have objected and said that it is offensive. And someone filed a FIR, a lawyer filed an FIR under section 299 of BNS, which says deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs. So yahi baat. MF Hussain is a very famous, acclaimed painter of our country. And now अब court इस पे देखेगा क्या करना है. CBI seeks death sentence for the convict in RG Kar murder case. This we have discussed in the previous two analysis sessions as well, that he has been offered life imprisonment, but people as well as now CBI are looking for a death sentence. Excavation begins of ancient well near Sambal Mosque. This is the religious issue. वहाँ पे मंदिर था कि मस्जिद था, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे. This is not important for us. तो उसी का excavation चल रहा है. Excavation means digging up and finding evidence. Supreme Court divided over Tahir Hussain. This is not important. Delhi elections is not important for you guys. Let's move ahead. This is also not important. Nothing important here. Crime scene recreated at SAS flat. Actor meets auto driver who rushed him to hospital. Nice. I heard he also got some monetary reward, so good for the guy. ठीक है. Okay. Moving ahead. This is again the same issue. All right. Nothing important here. In continued pitch for investment, AP Chief Minister meets Bill Gates in Davos. So ये World Economic Forum की एक summit हो रही है. World Economic Forum is also an international body which is headquartered in Davos. So Davos is in Switzerland. And वहाँ पे मीटिंग हुई है. चंद्रबाबू नायडू जी मिले हैं बिल गेट्स साहब से. He is pitching for investments. So that's nice. Okay. Now coming to the editorials, Russian ruler in the skies. So this is what I was telling you about. With military conflicts and incidents of state players posing threats to civil aviation rising, the issue of training proficiency and skills assume importance. Now, cases of misidentification, that many a times Air Force of a particular country has misidentified a civilian plane for a intruding, let's say, attacker plane or fighter plane. So that is what causes misidentification, and then the plane is shot down, then people lose their lives. That is what happens. यहाँ पे context लिखा होगा. Over 70 years ago, Ian Fleming created the fictional character of Secret Service Agent 007 who had the license to kill. On September 1, 1983, Korean Airlines jet flight 007 scheduled from New York to Seoul via Anchorage was shot down. ये मैं आपको historical context जो बता रहा था. By a Russian Air Force Sukhoi fighter plane when the Korean flight had deviated from its flight path due to navigational error.
All 246 passengers were killed. One of the passengers was a daughter of this person who began an organization to aid the victims of air accidents. Resulted in a big push in International Civil Aviation Organization to publish rules regarding conflict risk, but this was shot down by Russia and its allies in ICAO. So ICAO is sort of the international body which regulates civil aviation, how flights can operate safely and smoothly. इंडिया में इसका इक्विवेलेंट बॉडी को हम कहते हैं डीजीसीए. जो पर्सन होता है जो उसका इंचार्ज उसको भी डीजीसीए कहते हैं, बट the Directorate General of Civil Aviation is the Indian safety regulator. काफी बार आपने देखा होगा ये लोग रूल्स इशू करते हैं, गाइडलाइंस इशू करते हैं फ्लाइट में. इफ यू हैव ट्रैवल्ड देन आपने सुने होंगे अनाउंसमेंट्स अकॉर्डिंग टू डीजीसीए गाइडलाइंस. स्मोकिंग, ई सिगरेट्स, वेप्स आर नॉट अलाउड, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है फ्लाइट में, जैसे कुणाल कामरा का रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, या फिर कोई ऐसा untowardly incident hota hai towards the staff, then a person is banned by DGCA, put on a no-fly list, all of those things happen. So basically article इसी बारे में है कि कैसे हम इन टाइप के इंसिडेंट्स को रोका जाए. On Feb 27, just after Balakot, Pakistan Air Force was engaged in a dogfight. ये वो वाला केस है जहाँ पे an Indian Air Force officer was captured. अभिमन्यु नाम था उनका, अभिनंदन नाम था I think. So that was also sort of a similar case. Similar तो नहीं बोलेंगे, but हाँ on the same lines. Then इन्होंने multiple international examples दिए हुए हैं, which you don't need to remember, but yeah, it's interesting to see. Now they're talking about the Indian regulator's silence, that how we are silent on such issues. Do airlines in India have comprehensive training in place for pilots to recognize jam signals, and do the airlines have standard operating procedures in place for taking over navigation with alternate methods? So that is what they have discussed. We have had 3 passenger aircraft shot down by Russians or Russian agents. We have had the US Navy shooting down a passenger airliner, cargo aircraft shot down by terrorist groups. All of those examples, they are saying skill levels of pilots have dropped now, as there is now rapid training which has resulted in degraded monitoring to assess pilot proficiency. So they are saying that the world needs to wake up about this new disaster. Or do we act now or let another disaster pass? That is what the article is. इसमें और ज़्यादा कुछ analysis के लिए नहीं है. Different सा interesting सा article था. So I thought let's talk about it. On the left hand side, you see change dynamics. India must start a new transactional course with Trump administration. This we have already discussed. Implications for India now that Trump has come to power. We're talking about the executive orders yesterday. And that is what this article is about. They go 100% tariff, BRICS emerging economies, strategic and defense ties, all of those things. Withdrawing of US commitments from WHO, WTO, UN, and putting NATO alliance on notice, all of those things. India's concern or be a willing partner in India's growth unless it sees a benefit for itself. We are talking about the US administration and is to chart a more transactional course while moving to limit the damage from any adverse actions of the Trump era. Below this is an article which says an exit of bluster. The rest of the world must reassess the US role in fighting climate change. तो यहाँ पे again जो मैं आपको बता रहा था while we were starting the session, US is now officially going to withdraw from the Paris Climate Agreement. But is this the first time US is withdrawing from the Paris Climate Agreement? No. इससे पहले in the previous Trump administration उन्होंने कोशिश क्या करी थी, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से. एंड इससे पहले भी एक बार हुआ है. इससे पहले जॉर्ज बुश के टाइम पे he also withdrew from the Kyoto Protocol, which was another sort of multilateral arrangement for climate change, climate action. So this is sort of the third time that this is happening, and for Trump this is the second time for himself. So उसी के अराउंड ये आर्टिकल है कि कैसे अब ग्लोबल वार्मिंग को हम देखेंगे, हाउ डू वी गो अबाउट क्लाइमेट चेंज इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, बिकॉज यूएस इज अ वेरी मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस गैसेस, टू कार्बन एमिशन. आई थिंक it's the second largest contributor to greenhouse gases. First is I think China, second is US, third is India. लिखा होगा आर्टिकल में भी कहीं ना कहीं. On the right hand side, you see China's moves must recast India's critical minerals push. Now, this is an article about critical minerals and how the Chinese ministry recently expanded its export control list by including 28 entities from the US
effectively restricting their access to a swath of items under dual export control rules. तो जो है restrict कर रहे हैं ये काफ़ी सारे minerals को, which would now not be able to be used by other countries. These minerals are rare and refined materials vital for high technology application in aerospace, semiconductor, batteries, and advanced electronics. ये सारे minerals के नाम इन्होंने दे रखे हैं: tungsten, gallium, magnesium, beryllium, and so on. And they are saying that this is not the first time China has weaponized the export of its critical minerals. It's the approach that is strategic and calculated. अब इंडिया की सिचुएशन फिर उन्होंने बताई है कि इंडिया की क्या सिचुएशन है. They give you an example of how we found lithium reserves in Riyasi 1 year ago, 2023 के last में to be specific, and how recently we have established a branch or a new company sort of, which is called Kabil, and that company is now tasked to form partnerships and find potential areas where we can find critical minerals in different countries, forge partnerships, acquire those sources of minerals and material which can be important for our country in order to move forward in the right direction, be it in terms of technology, semiconductors, all of those things, right? So that is what the article is about. मोर और लेस हमने जस्ट तो डिस्कस कर लिए चारों एडिटोरियल आर्टिकल्स की. कुछ छोटे मोटे टिडबिट्स एंड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कुछ होगी तो मैं आपको अभी स्लाइड में जब हम जाएंगे वो दे दूंगा. Then oligarchy, which we see today, this is again related to the US elections, but this is not an important article. आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, चाहो तो skip कर सकते हो. It's not that important. The Greek philosopher Aristotle coined the word oligarchy to contrast the ruling of a wealthy few for corrupt and unjust purposes with that of the aristocracy of elite upper class. Okay. Geo leads in 12 telecom circles, Airtel dominates in 9. This is not important. What is US new rule for exporting AI chips? This is also not important. This is too niche and specific, or to US. हमारे लिए कोई इसका concern नहीं है. Is the government encouraging cross-pathy? This is what we were discussing in the beginning of the class. Why did the Maharashtra Food and Drugs Administration issue a directive allowing homeopathic practitioners to prescribe allopathic medicines? तो सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है, केस लॉ में क्या बोला गया है, व्हाई इज इट बीइंग चैलेंज्ड बाय द आईएमए, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं. चलो जिस्ट पढ़ लेते हैं हम इसकी जल्दी से. In 2017, the Maharashtra Medical Education and Drug Department issued a notification allowing these practitioners to practice modern medicine. This directive was challenged in Bombay High Court by IMA. Central government has been promoting Ayush medicine for some years now. Ayush, समझते हैं आप लोग क्या होता है? Can anyone tell me the full form of Ayush? Let's see how many people know the full form of Ayush. All of these are medical sort of practices which are native to India, तो मैं नहीं बोलूँगा, but are widely practiced in India as an alternative to allopathic medicine, which mostly developed in the West. The rationale in general has been that India has a shortage of doctors, particularly in rural areas, and that Ayush cadre of practitioners can help fill in these gaps. So basically, workforce की shortage को complete करने के लिए this move was taken. Ayurveda, Unani, Siddha, homeopathy. That's correct. Yes, that's correct. These are the things which together are called Ayush. Ayush से related हमने एक proper ministry भी बना दी थी, Ayush ministry. Piyush is saying how to analyze GK through mocks. मैं आता हूँ इस question पे. Let's just complete our analysis for the day. Then do we have anything else? Gandhian reflections are not important. This is not important. This is not important. Nothing important here. Nothing important here. Flagship scheme for girl child has helped defeat bias, says Modi. Now, this is talking about the Beti Bachao Beti Padhao wali scheme. Modi ji is saying it has resulted in significant improvement in child sex ratios in schools and all of those things, and has improved gender equality. Okay. Kharge questions BJP about crime against women. Kharge is the chief of Congress. Okay, what else do we have? National Health Mission COP several public health concerns, says center report. Okay, this is not important. MSP hike is not important. Tax avoidance treaties, this is not relevant for you guys. Okay.
Pakistan will continue to extend support to people of Kashmir. बाज नहीं आते ना ये लोग भी. नाम इनका शाहबाज है बट बाज नहीं आता ये इंसान. एनीवे दूध मांगोगे खीर देंगे वाला डायलॉग मुझे याद आ जाता है इस पे. बट ठीक है, लेट्स नॉट गेट इमोशनल. बांग्लादेश कोर्ट एक्विट्स खलीदा जिया इन 10-year-old. दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. चलो आगे चलते हैं. Trump tells Putin to make Ukraine deal now or face tariffs. So US is pushing for the war to end between Ukraine and Russia, and now he has threatened Russia with tariffs as well. So let's see what happens. Okay. Sports में वरुण एंड अभिषेक रेवल एट ईडन गार्डन्स. पहला T20 जीत गई कल इंडिया बहुत ही इजी पीजी तरीके से. Good start to the series. Sinner sets up a semi-final with Shelton Swiatek to face Keys. ये बात हो रही है ऑस्ट्रेलियन ओपन की. सेमीफाइनल है तो चलो इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. जो फाइनल जो जीतेगा उस बारे में हम बात करेंगे. उस दिन हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन. जडेजा पंट टेक्स सेंटर स्टेज एज सौराष्ट्र. दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. ओके. नॉट रियली. किसका हैप्पी बर्थडे आज? ये किसका हैप्पी बर्थडे था ये? अच्छा. Okay. Nice. All right. So that is the newspaper overview for today. Not a lot to unpack today. Just those 3-4 important editorial articles. Let's talk a little bit more about them. Coming back to our presentation. So let's start with the first one, which is the cross-pathy ones. As we were discussing, that Maharashtra Food and Drugs Administration recently allowed them to practice and prescribe allopathic medicines by taking a license certificate. And फिर इसको चैलेंज किया है मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में. एंड बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है इस पे. अभी इस पे डिसीजन आना पेंडिंग है. केस लॉ जो यहाँ पे बात हो रही है, इन 1996 देयर वाज अ फेमस केस पूनम वर्मा वर्सेस अश्विन पटेल. नाम लिख देता हूँ मैं. आपको याद नहीं करना है वैसे, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. पूनम वर्मा वर्सेस अश्विन पटेल वाज द केस जहाँ पे जो मैं आपको इंसिडेंट बता रहा था ना कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर गेव एलोपैथिक मेडिसिन एंड द पर्सन डाइड. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डेथ बाय नेग्लिजेंस है बाय द डॉक्टर एंड द डॉक्टर वाज चार्ज अकॉर्डिंगली. एंड फिर ये आर्टिकल यही बताता है कि हम आयुष मेडिसिन को प्रमोट कर रहे हैं हमारे देश में काफी टाइम से. मोदी जी भी काफी इसको प्रमोट करते हैं, which is okay. I mean, it is sort of filling in a gap, which is true. I take that point completely, that allopathic medicine और proper healthcare सारे villages में या फिर in deeper pockets of the country, rural pockets वहाँ तक नहीं पहुँचा है. So ठीक है, this can help as a additional measure, but can it replace allopathic medicine? No. Should homeopathic doctors be allowed to prescribe allopathic medicines without studying allopathy? Also no. So let's see what happens in this particular case. Although the shortage is real, that is true, that we need more doctors, but इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप किसी को भी अलाउ कर दो मेडिसिन लिख के देना. तो फिर क्या ही फर्क हो गया? फिर इससे अच्छा ना ही दो. बंदा एटलीस्ट इस रिग्रेट में तो ना मरे कि डॉक्टर साहब की वजह से मैं मर गया. So that is what the article is about. It's basically asking a question: is the government encouraging cross-pathy? Cross-pathy is, combining both of these without really having a logical basis for it. ठीक है. The next one was it's Russian rule in the skies. ये हमने already डिटेल में डिस्कस कर ही लिया. इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं. Basic facts अगर आपको जानने ICAO के बारे में, it's a intergovernmental sort of a body. It is also associated with the United Nations. Established हुआ था 1947 में and headquarters है इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में. So this is an headquarter which is not in Geneva. इसलिए आप लोग इसको याद कर सकते हो. ICAO का headquarter is in Montreal, Canada. Established in 1947. So ये हो गया कुछ आपका static tidbits. इंडिया में जो इसकी आप बोलो डोमेस्टिक अथॉरिटी में आपको बता दिया DGCA. DGCA का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है
एंड यही काम होता है, सेफ्टी इंश्योर करना डीजीसीए का, कि एवरीथिंग इज इन लाइन, इज स्मूथ एंड गोज ऑन इन अ सेफ मैनर, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो दैट इज व्हाट द article was about. Now, the third one was China's moves must recast India's critical mineral push. Now, ये interesting article है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. तो अभी ये जो हम पढ़ रहे थे आर्टिकल, इसमें लिखा था कि चाइना इज पुटिंग अ sort of using its export power as a strategic move where it's trying to curb down the export of those minerals which are strategically important for the development of technology, be it semiconductors, be it आपका other technology. तो उससे फायदा क्या होगा, उससे चाइना पे डिपेंडेंट रहेंगी बाकी कंट्रीज इन ऑर्डर टू प्रोक्योर दोज थिंग्स, इन ऑर्डर टू परचेज दोज थिंग्स विच वुड establish its monopoly in the market in terms of batteries, high tech manufacturing, आपका यही सब सेमीकंडक्टर्स वगैरह. तो चाइना दोनों चीजों को बैलेंस में लेके चल रहा है कि कितना उसको एक्सपोर्ट करना है टू बिकम एक्सपोर्ट हब, एंड कहाँ पे उसको एक्सपोर्ट अपना कट डाउन करना है. इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का पोटेंशियल जो है हम पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, विच इज व्हाट द आर्टिकल सेज, दैट दिस इज अ वेक अप कॉल फॉर इंडिया टू enhance its domestic mineral exploration, its production capacity, and push for critical minerals का development, क्योंकि ऐसे दिक्कत हो जाएगी, वरना अगर हम सिर्फ चाइना पे रिलायंट रहेंगे. वही रियासी वाला मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि ठीक है, हमें लिथियम रिजर्व्स मिल गए, उसके बाद क्या हुआ, उसमें कोई प्रोग्रेस हुई नहीं. क्या वहाँ पे कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई? नहीं. क्या पे वहाँ पे कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगा? नहीं. क्या वहाँ पे कोई फॉरेन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इन्वेस्टर अपनी कंपनी बनाने आया? नहीं. इट्स जस्ट देयर, इट्स जस्ट लाइंग देयर. तो उसका कुछ नहीं हो रहा. अब उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि वी नीड टू डू बेटर. वी नीड टू show that to the investors or to the manufacturers that ease of doing business is going to be there, and we need to encourage them to develop these critical mineral वाले resources. क्योंकि गवर्नमेंट डेटा ये कहता है कि अभी जितने भी हमारे ये मिनरल रिजर्व्स हैं उनमें ऑक्शंस में मिनरल ब्लॉक्स पे ऑक्शन नहीं हो रहे हैं. 48% ऑफ द मिनरल ब्लॉक्स आर अवेलेबल एज ऑफ नाउ, एंड मार्केट में एंथुजियाज्म नहीं है इस चीज को लेके. We have identified some 25-30 critical minerals which are important for development of technology, national security, all of those things. But we need to incentivize people, be it private, be it public, to come forward and work on this thing. तभी कुछ बात बन पाएगी. खानिज विदेश इंडिया लिमिटेड करके एक हमने कंपनी बनाई थी जो ओवरसीज जाके इन्वेस्टमेंट्स ऑब्टेन करेगा क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, स्पेशली लिथियम कोबाल्ट वगैरह के लिए. एंड रिसेंटली एक एक्ट भी पास हुआ था, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस अमेंडमेंट एक्ट, MMDRA कहते हैं इसको. एंड इसमें भी हमने काफी सारे जो है मिनरल्स आइडेंटिफाई किए थे, उनसे रिलेटेड रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाए थे. बट वही है कि बिडर्स जो हैं अभी नहीं मिल पा रहे, एंड दैट इज व्हाट दिस आर्टिकल इज पॉइंटिंग आउट टू. ठीक है जी. काबिल के बारे में आपको पता होना चाहिए. इट्स सॉर्ट ऑफ अ पब्लिक सेक्टर जॉइंट वेंचर थिंग, जहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं. एक HCL है, एक नाल्को है और एक MECL है. ये 3 कंपनीज मिलके दे हैव फॉर्म्ड अ कंपनी कॉल्ड काबिल, खानिज विदेश इंडिया लिमिटेड. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, खानिज विदेश इंडिया लिमिटेड. इसको शॉर्ट में they are calling काबिल. So one is MECL, then there is NALCO, and there is HCL. So these 3 companies have entered into a joint venture agreement to form this particular company, which is responsible for procuring investments, finding out different mines, minerals जहाँ पे हम invest कर सकते हैं, and basically focus यहाँ पे battery development and battery वाले minerals which are lithium and cobalt, उन पे ज़्यादा है. ठीक है. So that is what the article is about. Okay जी. चल, लास्ट आर्टिकल हमारा जो है यूएस का रोल इन द क्लाइमेट चेंज थिंग, ये डिस्कस कर लेते हैं. तो मैं आपको बता रहा था कि इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यूएस हैज पुल्ड आउट ऑफ अ क्लाइमेट एग्रीमेंट. ट्रम्प इससे पहले एक बार कर चुके हैं, उससे पहले जॉर्ज बुश एक बार कर चुके हैं. आई थिंक इन 2001, यस 2001 क्योटो प्रोटोकॉल से उन्होंने विड्रॉ किया था. एंड अब इसके बाद दिस थिंग इज नॉट वेरी एनकरेजिंग, बिकॉज यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस इज नोवेयर नियर इट्स गोल ऑफ कंट्रोलिंग कार्बन एमिशंस एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जो हमें दिस वाज आल्सो द फर्स्ट ईयर जहाँ पे हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस मार्क जो हमारा था, जो हमें अचीव करना था कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर है वो इससे ज़्यादा ना बढ़े.
ये बड़े हुए 1 साल बीत गया है. We have not been able to put this under control, and this makes things a little more grim, a little more demotivating for climate change in a global perspective, because जैसा कि मैं आपको बता रहा था, US is the second largest emitter of greenhouse gases, so it's sort of contributing a lot of greenhouse gas emissions. It's second after China, third is India. तो इन्होंने परसेंटेज रेशियो भी बताया है आर्टिकल में. दे आर सेइंग दैट दीज टॉप 3 कंट्रीज कंट्रीब्यूट 42.6%. The top 3 contribute how much? 43.6%. And the bottom 100 contribute 2.9%. Can you see the disparity? कि सिर्फ 3 कंट्रीज 43% कर रही हैं और जो नीचे वाली 100 कंट्रीज हैं रैंकिंग में वो 2.9% कर रही है. सो देयर इज अ ह्यूज मिसमैच जहाँ पे these 3 countries need to work really hard in order to cut down on the global carbon emissions. अब यहाँ पे डिफरेंस एक ये भी आ जाता है कि देखो यूएस एंड चाइना आप कह सकते हो एक तरीके से आर डेवलप्ड कंट्रीज. चाइना पूरी तरीके से नहीं कह सकते, डेवलपिंग और डेवलप्ड के बीच कह लो, बट यूएस इज नो डाउट अ डेवलप्ड कंट्री एंड इंडिया इज अ प्रॉपर डेवलपिंग कंट्री. तो इट्स अनफेयर टू एक्सपेक्ट इंडिया टू डू सो मच विच इज लेट्स से रिलेटिव टू यूएस इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन का कंट्रोल, क्योंकि हमें अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमें अभी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करनी है. यूएस वो सब चीजें कर चुका है, सो यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है. तो काफी सारी थ्योरीज हैं इसमें, एनवायरमेंट लॉ में नहीं जाएंगे हम, बट हाँ पॉइंट इज कि not just being the second largest greenhouse gas emitter, US is also the world's largest crude oil producer. अब क्रूड ऑयल से क्या होता है, हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कम होते हैं और क्रूड ऑयल को बर्न करने से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बढ़ता है. क्रूड ऑयल अब सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो सबसे ज्यादा बेच भी यूएस ही रहा है, तो वो भी चीजें हैं. नेचुरल गैस में भी यूएस नंबर 1 पे है, एंड आपका जो नॉर्मल गैस होती है लिक्विड गैस उसमें भी यूएस नंबर 1 पे है. तो ये सारी चीजें भी आर एक्सेंचुएटिंग फैक्टर्स व्हिच मेक इट अ कॉज ऑफ कंसर्न अबाउट यूएस पुलिंग आउट ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट. एंड इनके जो टारगेट्स हैं, जो 2030 के इनके एमिशन रिडक्शन टारगेट्स थे, उनके आसपास भी नहीं है अभी यूएस. यही बात है कि अब देखो आगे क्या होता है. अभी एग्जिट का उन्होंने अनाउंस कर दिया है, अब आगे चल के COP30 मीटिंग होगी, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग जो होती है, COP मीटिंग हर साल. COP30 would happen in November 2025. आई थिंक ब्राजील में होनी है अगली वाली. सो देखते हैं उसमें यूएस किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है, किस तरीके से बिहेव करता है. दैट इज व्हाट the article also talks about, and that brings us to the end of today's analysis. Let's look at the vocabulary for the day. The first word of the day is languor. Languor का मतलब होता है हिंदी में बोले तो आलस में मजे मारना. The state of feeling often pleasant of tiredness or inertia, कि थकान हो रही है बट खुशी वाली थकान हो रही है. That is what languor means. ठीक है, I can't really recall a Hindi equivalent of this. सुस्ताना कह सकते हैं इसको एक तरीके से, बट हाँ that is what it is. Lassitude, lethargy, listlessness, those are synonyms. Vigor, enthusiasm, vivacity. He remembered the languor and warm happiness of those golden afternoons is the sentence. So that is the word languor. State of feeling present of tiredness or inertia. Inertia मतलब एक ही जगह पड़े रहना in this context. Qualm मतलब होता है डाउट करना किसी चीज पे, अनईजी फील करना, टेंशन लेना, an uneasy feeling of doubt, worry or fear, especially about one's own conduct. A misgiving, doubt, hesitancy, certainty, assurance and conviction are opposites. He felt no qualms about borrowing money from friends. मतलब उसको कोई भी हिचक नहीं हुई. तो कह सकते हो हिचक होता है, उसको qualms कहते हैं इंग्लिश में. Then there is interstice as the third word. Interstice means simply space, a gap, an interval. अच्छा ये synonyms भी ठीक है. An intervening space, especially a very small one. ठीक है, so space, gap, interval, continuity, continuation are antonyms. The interstices between the bricks let the cold air in. So बहुत छोटा सा एक अगर gap है तो that would be called an interstice. ठीक है. So that is the vocabulary for the day. 3 new words: interstice, qualm and languor. And that brings us to the end of today's class. Now coming back to your question that how to study GK from mock, right? देखो अब mock में आपके GK अगर आप CLAT mock की बात करो तो पैसेज बेस्ड जाएगी, करेक्ट? So you would cover anywhere between 4 to 5 topics.
अब उसमें नहीं जा रहे हम कि वो कंटेक्चुअल जीके थी, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड थी या फिर मेमोरी बेस्ड थी. दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. But these 4-5 topics, if they are asked in a mock, you can be assured that these are very, very important topics. Because in mocks, the topics are curated in a manner that those are the high probability topics which have a higher probability of being asked in the CLAT exam. Looking at historical trends, looking at its relevance, looking at how it aligns with the syllabus. So ये 4-5 टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है. यू कैन यूज मल्टीपल रिसोर्सेज. यू कैन यूज मंथन इन ऑर्डर टू कवर दीज. यू कैन यूज गूगल और चैट जीपीटी करो तो एक बार फैक्ट्स वेरीफाई कर लेना, कभी कभार गड़बड़ इन्फॉर्मेशन दे देता है वो. सो यू कैन यूज एनी ऑफ द ऑनलाइन रिसोर्सेज विच यू हैव इन ऑर्डर टू स्टडी दीज टॉपिक्स एंड फिर इसके नोट्स बना लो. आई वुड सजेस्ट कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो देर आर 2 ways to go about it. Either you go in a date wise manner or you go in a topic wise manner. You can choose whichever suits you better. डेट वाइज मैनर मतलब आज जैसे 23 जनवरी, तो आज जो जो चीजें हुई, जो जो मैंने पढ़ा, उसके बारे में मैंने नोट्स बना लिए. और टॉपिक वाइज हो गया कि आपने, लेट्स से यू हैव notebook which you have divided into 4 sections. One is your national news or national affairs, one section is international news, one section is, let's say, science and tech and economy related news, and so on. There could be like 4-5 major sections or 5-6 major sections, जिस हिसाब से भी आपको bifurcate करना है. And then you can keep on adding topics in this. अब जैसे इंटरनेशनल में अगर मान लो कोई ब्रिक्स की समिट हुई तो मैं उसको इंटरनेशनल में लिख दूंगा, फिर आसियान की समिट हुई फिर मैं उसको इंटरनेशनल में लिख दूंगा. सो एट द एंड ऑफ द ईयर यू वुड हैव ऑल इंटरनेशनल न्यूज एट वन प्लेस, ऑल नेशनल न्यूज एट वन प्लेस, ऑल योर डेवलपमेंट रिलेटेड, लेट्स से मिलिट्री एक्सरसाइजेस कुड बी वन कैटेगरी, ऑल एट दैट वन प्लेस. So that could be one approach. Choose one approach and stick through it throughout the year. ठीक है. अब मैं आपको नहीं बता रहा कि कौन सी अप्रोच आपको चूज करनी चाहिए. Both of them work equally well and it depends on your temperament. अगर आपको डेली बैठना है, जो कि आपको बैठना भी चाहिए, तो डेट वाइज अप्रोच कैन बी अ गुड वे टू गो अबाउट इट. अगर आपको लगता है कि कभी कभी हो सकता है मेरा गैप आ जाएगा बिकॉज ऑफ स्कूल, बिकॉज ऑफ एनी अदर कमिटमेंट्स, सो टॉपिक वाइज भी एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि मान लो आज कोई इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुआ बट आज आप नहीं बैठ पाए, नहीं नोट्स बना पाए, तो कल आप उसको टॉपिक में अपने लिख सकते हो. सो दैट कुड बी वन वे ऑफ गोइंग अबाउट इट. ठीक है. एंड इसके बाद ऑफ कोर्स देयर इज रेगुलर रिवीजन. मेक श्योर दैट यू रिवाइज योर whatever notes you have made at an interval of firstly पहला रिवीजन आप 2 दिन बाद कर लो, अगला रिवीजन आप 10 दिन बाद कर लो, और उसके बाद अगला रिवीजन यू कैन डू एट द एंड ऑफ द मंथ. ठीक है. That would ensure that you remember everything which you have written down. Because अगर आपने बस लिख के छोड़ दिया और फिर उसको देखा ही नहीं 3-4 महीनों तक, that would be lost from your memory. ठीक है, वो डिलीट हो जाएगा. तो this is how you go about analyzing or let's say studying GK from a mock. That is a very detailed explanation. Vidushi saying, our Olympics of last year 24 important for CLAT 26? Only India's performance. That's it. Although chances कम है नॉन ओलंपिक ईयर में ओलंपिक से क्वेश्चन आने के, बट डोंट रिस्क इट. जस्ट रिमेंबर इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा इन द ओलंपिक गेम्स. ठीक है. ऑलरेडी क्लैट में क्वेश्चन आ चुका है इस साल, सो अगेन उसके चांसेस और ज्यादा कम हो जाते हैं 26 में आने के, बट स्टिल टू बी सेफ आप इंडिया के बारे में पढ़ सकते हो. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास गाइस. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड आई होप टू सी यू ऑल इन बिग नंबर्स टुमारो एट 3 PM. Till then, take care, keep learning, keep preparing. Signing off. Bye-bye.